Hello students, welcome back to Winsome Digital Learning Platform of Winsome International School. आज हम क्लास 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम चैप्टर वर्ड पावर के बारे में पढ़ेंगे. There are certain things, कुछ स्पेलिंग्स होती हैं, इसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स सब कुछ आता है. We'll study the questions one by one. So let's get started with the exercise. First question says choose the option with the correct spelling. हमें सही स्पेलिंग को आइडेंटिफाई करना है. पहला है FERGH fervent, frightened, frightened, and this is frightened. So option C is correct spelling because FRIGHTEN is frightened. Frightened is the correct spelling. Frightened मतलब डर जाना. Now, gravity, garivity, and gravity. Gravity, gravitational force. Gravity is something related to science. Gravity, spelling of gravity is GRAVITY. You have to spell it. You have to see the spelling. You have to pronounce it phonetically, and then you'll get the answer. So option B is the correct answer. Third. Parade, purred, pureed, parade. PARADE. Option C is the correct answer because PARADE. Parade is the correct answer. Accident, 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 accident. So accident is the correct answer. Option D is the correct answer because ACCIDENT, accident. I met with an accident. So you have to spell it. आपको spelling check करनी है, phonetically उसको sound, उसके sound check करने हैं, and then you will get to know which spelling is correct. So here option D is the correct answer. Question 5. Scholar, scholar, schooler, and scholar. Option D is the correct answer because SCHOLAR, scholar. Scholar, option D is the correct spelling because all other spelling is wrongly written. This spelling is correct. Scholar is the correct answer. Now, patent, patient, patent, patent. So option B is the correct answer. Patient. Patient. So you have to spell it. इसका कोई solution नहीं होता. You should crack the spelling phonetically. आपको अच्छे से spelling को spell करना है. उसकी spelling 2-3 times check करनी है, and then you will get to know which spelling is correct. Dangerous, 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 and dangerous. So dangerous is the option A is the correct spelling because DANGER. Danger की आपको spelling आती है. Danger की spelling होती है DANGER. O you will add OUS, it will become dangerous. So option A is the correct answer. Luxury, 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 luxury. Option C is the correct answer because the right spelling of luxury is LUXURY, luxury. Dumbish, demolish, 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 demolish. उसको एकदम खत्म कर देना. That building was demolished by the authority. Demolish, DEMOLISH, demolish. खत्म कर देना, उसको एकदम खत्म कर देना, जड़ से हटा देना. Demolish. Universe, universe, universe. All the spellings are wrong. Universe, VERSE. Uni, you know the spelling of uni, UNI. Verse, VERSE. So option C is the correct answer. I'm telling you again and again, you have to spell the spelling. आपको spelling उसको phonetically sound करना है, फिर देखना है कौन सी spelling right है. Choose the correct synonym of the given word. Synonym होता है बेटा same meaning होती है. Antonym is different meaning and synonym is same meaning. Tremble, tremble का क्या meaning होगा? Still, tremble मतलब shake करना या थोड़ा बहुत हिलना. Talk, no. Calm, no. Shake. Tremble means shake. Tremble मतलब shake करना.
लीडर, हमारे ग्रुप के लीडर होते हैं, तो स्लेव बंदी हो गया, सिंपल लेस चीफ, चीफ इज द लीडर ऑफ द ग्रुप, लीडर मतलब चीफ, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डिसगार्ड, डिसगार्ड मतलब हटा देना, डम कर देना, डम डेंजर डिस्कवर ड्रीम, डम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डिस्कार्ड मतलब डम कर देना, हटा देना। नर्वस, नर्वस मतलब एकदम डर जाना, ब्रेव, फर्म, हैप्पी, नो, फियरफुल, डर जाना, नर्वस इज फियरफुल, आई वॉज नर्वस yesterday फॉर माई एग्जाम, सो नर्वस का सिनोनिम होगा फियरफुल। अवेयर, अवेयर मतलब सारी अवेयरनेस होना, आप अवेयर हैं कि आपका कल एग्जाम, आपको पता होना चाहिए। अवॉइड, अवॉइड रॉन्ग है, एवरेज रॉन्ग है, वार्म रॉन्ग है, अटेंटिव, इसका मतलब अटेंटिव, यू शुड बी अटेंटिव, यू शुड नो दैट, you should be aware that your exam is tomorrow. Bounce, bounce मतलब you bounce the ball, right? Set, lazy, fix, jump, bounce का एक मीनिंग jump भी होता है, so option D is the correct answer. Dive, deep, dig, dive, dip, dive का मतलब dip भी होता है, I dive into the water means dip, its synonym is dip. एक्सेस, एक्सेस मतलब ज्यादा, लिटिल, बेस, लैक, नो, सरप्लस, एक्सेस मतलब सरप्लस, ज्यादा होना, आई हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी, सो एक्सेस इज सरप्लस, ज्यादा होना, एक्सेस होना। हार्म, हार्म मतलब किसी को चोट पहुंचाना, क्योर, नो, मैन, नो, बिल्ड, नो, हर्ट, हार्म मतलब हर्ट करना किसी को, आई हैव हर्ट यू, मैंने आपको चोट पहुंचाई है, हर्ट यू, हार्म का सिनोनिम होगा हर्ट। इन्वेंट, इन्वेंट मतलब किसी चीज को बनाना, इनवाइट, नो, फिनिश, नो, फेल, क्रिएट, इन्वेंट मीन्स टू क्रिएट, द सिनोनिम ऑफ इन्वेंट इज क्रिएट, ओके। चार्ल्स बैबेज क्रिएटेड द कंप्यूटर्स, so created, invent is the some or the other same thing. Now choose the correct antonym of the given word. अभी हमने synonym same word same meaning होता है, antonym एकदम different meaning होगा. Now clumsy, clumsy, that boy is very clumsy, clumsy मतलब चालाक होना. Lazy, no. Huge, no. Heavy, no. Clever, clumsy means clever, antonym of clumsy is clever, clumsy मतलब होता है सीधा साधा, कम दिमाग लगाने वाला, और उसका एंटोनिम क्या होगा, चालाक होना, क्लेवर इज चालाक, clumsy इज एकदम सीधा साधा एंड क्लेवर इज चालाक। एंट्री आपको पहले ही पता, हॉल में एंट्री, और नेक्स्ट क्या होता है, एग्जिट, एक तरफ से एंट्री, एग्जिट, एंट्री मतलब एंटर करना, एग्जिट मतलब बाहर निकालना। सेल्फिश, अ पर्सन हु इज वेरी सेल्फिश, सेल्फिश मतलब क्या होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचना, तो मीन तो सिनोनिम हो गया ग्रीडी, नैरो। काइंड, सेल्फिश का एंटोनिम क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा, एंटोनिम मींस ऑपोजिट, सेल्फिश, ही इज अ सेल्फिश बॉय, ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है। काइंड, काइंड इज अ पर्सन हु विल थिंक अबाउट एवरीवन, ही विल नॉट बी अ सेल्फिश। लेम, लेम का मीनिंग होता है the one who is not strong, feeble, weak, large, strong, lame is weak, weak, lame मतलब weak होता है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, strong, he is a lame boy मतलब ये weak है, and he is a strong boy, lame का opposite होता है strong। warm, warm का opposite क्या होगा, hot, smooth, warm, cool, warm का warm मतलब गर्म होना, cool मतलब ठंडा होना, सो warm का ऑपोजिट इज cool। vanish, vanish, lost, no, lost नहीं, vanish का lost नहीं होगा, fade नहीं होगा, melt नहीं होगा। appear, vanish मतलब vanish ममा क्लोथ्स में यूज करते हैं, vanish से क्या होता है, दाग गायब हो जाते हैं, vanish मतलब गायब हो जाना, और दूसरा उसका ऑपोजिट क्या होगा, appear मतलब दिख जाना। you can see, you can appear, the my teacher appear in the classroom, so appear is the thing which you can see and vanish is हट जाना, गायब हो जाना। mercy, mercy means बहुत ज्यादा दयालु होना, mercy is दयालुता। faith, wrong, love, wrong, grace, cruelty,
क्रूएल्टी मतलब ये बहुत क्रूअल राजा है, ये बहुत ज्यादा लोगों पे जुल्म करता है, बहुत क्रूअल है, सबको मारता है, सबको डांटता है. क्रूअल इज द पर्सन हु इज not good, and mercy the person who does good to everyone. differ मतलब different, turn, finish, similar. different मतलब different का opposite क्या होगा? similar. different मतलब अलग अलग, और similar मतलब same. so different and similar. he is different, he is, these are similar. moral, good, noble, right, evil. moral का क्या होगा opposite? evil. evil is not good, moral is good. gland, brave, bold, heroic, meek. gland का opposite होता है gland का meek. now question 1 to 4, choose the word which is spelled correctly. वही आपको correct word choose करना है. now approach, 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 approach. so option A is the correct answer. APPROACH. approach. APP approach. ROACH. okay, so option A is the correct answer. approach. option A is the correct answer. this is wrong, this is wrong. if you spell it phonetically and if you check the spelling, all the spellings are wrong. option A is the correct answer. APP approach. ROACH. contagious, 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 contagious. so option A is the correct answer. contagious. you can break it. contagious. CON con TAGIOUS. contagious. so option A is the correct spelling. all other spellings are wrong. option A is the correct answer in both the question. con, you can spell it contagious. you can break the spelling and then you can identify which spelling is correct. pilgrimage, 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 pilgrimage. option D is correct answer. pilgrimage. so you can break it in 3. PIL, GRI, mage, MAGE. all other spellings are wrong. option D is the correct answer because pilgrimage. brilliant, brilliant, brilliant. option B is the correct answer. brilliant. Brilliant. you can break it in 2 words. BRILLIANT. brilliant. this boy is brilliant in the class. इसके बहुत सारा दिमाग है, ये बहुत smart है, sharp है. so brilliant is the person who is good in everything and good in studies too. brilliant. option B is the correct answer. now choose the synonym of dismal. dismal. glad? no. bright? no. smart? gloomy. gloomy. option C is the correct answer. the synonym of dismal is gloomy. now choose the synonym. choose the synonym of vanity. vanity. synonym, same meaning. vehicle, truth, scheme, pride. vanity, the synonym of vanity is pride. they both have the same meaning. vanity, pride. moving with pride. एकदम pride से चलता है. lion moves with a pride. choose the synonym of uncanny. unusual, regular, common, natural. unusual, जो रोज नहीं होता. it is unusual thing. it doesn't happen every day. uncanny का synonym is unusual. choose the synonym of comply. comply. what is the meaning of comply? same meaning. deny, agree, apart. agree. I comply with you. I agree with you. comply means to agree with some judgment, argument or anything that you are agreeing with. so agree ka, comply ka synonym is agree. what is the antonym of offensive? evil, uncivil or delightful. option D is delightful. offensive,
this boy is very offensive, मतलब हर चीज में मारना पीटना, offensive type का nature. And delightful, the antonym is delightful, अच्छा nature, good in manners, good in everything. So the antonym of offensive is delightful. Choose the antonym of taunt. किसी को taunt करना, किसी को बुरा बोल देना बिना सोचे समझे, you have taunted that person. Insult, jeer, tease, praise. आप या तो प्रेज करते हो या तो टॉन्ट करते हो. यू प्रेज समवन, आप किसी की तारीफ करो, किसी को अच्छा फील कराओ. एंड टॉन्ट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ प्रेज. टॉन्ट ऑपोजिट इज प्रेज. So we have covered this chapter, word power, and keep learning, keep practicing for your SOF Olympiad. Please stay tuned with Winsome Digital Learning Platform of Winsome International School. Bye students.